So find the cosine integral of the given function. F of x is equal to, function is given in two parts. For 0 to 1 it is 1, and for x greater than 1 it is 0. Okay, so cosine integral means you have to represent this f of x by using integration. This is the simple meaning. Okay, so if you observe the 6 formulae of transforms, Fourier transforms, then you will get the idea that f of x is used in inverse integral on left hand side. Okay, so if you have to find cosine integral of the function, then you have to consider f of x is equal to inverse formula for the cosine integral. ओके, इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है वो आपको यूज़ करना है. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, व्हाट इज़ द फॉर्मूला? इट इज़ 2/π 0 to infinity fc of lambda cos lambda x d lambda. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको कोसाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है फंक्शन का, तो फंक्शन इज इक्वल टू सम इंटीग्रेशन, ऐसे आपको उसको लिखना है. और इंटीग्रेशन में क्या रहेगा? कॉस लैम्बडा एक्स, बिकॉज यू आर फाइंडिंग कोसाइन इंटीग्रल. अगर आपको पूछा है साइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला रहेगा. और इनसाइड क्या होगा? इनसाइड द इंटीग्रेंड यू विल हैव साइन लैम्बडा एक्स. और अगर आपको पूछा है फाइंड आउट द फूरियर इंटीग्रल फॉर द गिवन फंक्शन, देन यहाँ पे क्या होगा? सिंपल एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई लैम्बडा एक्स रहेगा. सो सिंपली इंटीग्रल मीन्स व्हाट? राइट द फंक्शन बाय यूजिंग इंटीग्रल. ये उसका सिंपल मीनिंग है. ठीक है. सो नाउ you have function itself, you don't have fc of lambda. So first step of solution of this is you have to find fc lambda for this function, and then at the end just substitute fc lambda here. That will be your final answer. Okay, so fc of lambda का फॉर्मूला क्या है? सेम फॉर्मूला है, सिर्फ आपको क्या करना है? 2/π को हटाना है, 0 to infinity. fc of lambda की जगह पे क्या होगा? f of x cos लैम्बडा एक्स विल बी एज इट इज़. और ये जो डी लैम्बडा है ये सिर्फ इनवर्स के फॉर्मूले में रहता है, इंटीग्रल के फॉर्मूले, यहाँ फॉर्मूले में यहाँ पे क्या होगा? डी एक्स होगा. ठीक है. सो एफ सी ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू, नाउ अगेन द रेंज इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, 0 to 1 एंड x greater than 1. दैट मीन्स 0 to 1. So 0 to 1, for 0 to 1 function is 1 cos lambda x dx, plus for all other values of x greater than 1, that is from n 1 to infinity, function is 0. Okay, cos lambda x dx. So at the end you have the single integration from 0 to 1 cos lambda x dx. So it is equal to integration of cos, it is sine, okay, angle is as it is, divided by, if you have cos ax, then integration of cos ax with respect to x is sine ax divided by a, that is multiple of the variable in angle. Here the multiple of variable x in angle is lambda, so divide by lambda. Range of integration 0 to 1, so it is equal to sine lambda by lambda minus sine 0 is 0 divided by lambda. So it is equal to sine lambda by lambda minus 0, that is sine lambda by lambda. This is what? This is your fc of lambda. Okay, sine lambda by lambda. But the question is not find the cosine transform, question is find cosine integral. So you have to replace this fc of lambda in the integral, and that integral will be your last answer. Okay, so f of x is equal to 2/π 0 to infinity sine lambda by lambda into cos lambda x d lambda. This is your final answer. Okay.